Hello. Today we have the very well-known physiotherapist from Nagpur, KV Nagrawal, and he's more into sports. So let's see what are his perspective on mental health in sports. So, sir, you are into physiotherapy, Right. and first of all, I would like to ask you about your journey in physiotherapy. कि कैसे आपका growth या फिर कैसे experiences पहले से अभी तक एक brief kind of. So it's very funny thing. Like I was never into studies, always into sports. So one of my uncle he told me, to sports physio बन गया. I was clueless ये होता क्या है. So he took out his phone, opened Google, India team sports physio, and he showed me. And that is how I saw कि अच्छा sports का डॉक्टर ये तो अच्छा साउंड हो रहा है. घर वाले खेलने तो दे नहीं रहे. I took that profession of physiotherapy किया, then I did my masters in sports physiotherapy, then I did some certification of BCCI, sports science, sports medicine, and that is how my journey started. I've been fortunate to work in BCCI, Mumbai cricket team, Darbar team, in Bangalore NCA, in Bollywood, with the Indian Army. So it's been a very good journey and a very good experience कि मैं हर जगह different clients से मिला, different sports वालों से मिला, and try to understand the sport. Every sport has a different injury. If I talk about elbow, cricket में elbow injuries अलग होगी और एक कबड्डी वालों को अलग होगी. Diagnosis सेम है, mode of injury अलग है. क्योंकि mode of injury अलग है, requirement अलग है, treatment changes. वो think कि this joint who has just has a movement can differ in two different. So this thing is so vast and बोर नहीं होता पता है हमारा सब्जेक्ट क्योंकि हम स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है. देयर इज म्यूजिक, देयर इज स्पोर्ट्समैन, एवरी इट्स लाइवली, कोई ऐसा डॉक्टर वाला फील नहीं है, एंड दैट कीप्स मी गुड. Oh, that's really nice. I think you have a very huge experience in different fields. Yes. And that's what you get to learn a lot of things, a lot of Right. experiences. Yes. And the main thing is you are connected with sports and then comes the interest Yes. to treat athletes or work with them. Like they say, anyone can be a sports physio, but you need an experience to actually be the sports physio. Yeah, because you have to be in their shoes. Right. Then you get to know better, I guess. Yes. Yeah, that's really inspiring because it's like a huge experience. So, how many years you have been into this field? So I believe 13 plus years. Oh, that's a huge experience. Yeah, that's a huge experience. So now you're working with a lot of athletes as well, right? Right. So talking about mental health, as this is all about mental health. हाँ. So आपने कितने चेंजेस देखे हैं कि कोई चेंज है कि पहले मेंटल हेल्थ था या उसका फ्रीक्वेंसी अभी ज्यादा अवेयरनेस है या कुछ डिफरेंस है या डिफरेंस ही नहीं है? So डिफरेंस ये होगा कि पहले तो पता ही नहीं था कि मेंटल हेल्थ करके कुछ होता है. अभी एटलीस्ट कुछ जनों को पता है कि मेंटल हेल्थ करके कुछ होता है. मे बी बिकॉज द प्लेयर्स दैट दे फॉलो, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिकेट. सो क्रिकेट में देयर इज अ मेंटल हेल्थ कोच, आईपीएल में होता है मेंटल हेल्थ कोच. तो वो जब दिखता है टीवी पे तो द यंगस्टर्स फॉलो इट एंड दैट इज हाउ दे नो कि अच्छा अगर मैं नर्वस हो रहा हूँ, अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद एक बंदा है जिसके पास मैं जा सकता हूँ, बट वो बंदा कौन है दे डोंट नो. So end result, maybe I know who's a mental coach, but I don't know where. And biggest problem is, I don't know whether I should go to him. तो मुझे खुद ही एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो फिर मैं जाऊँ क्यों, या मेरे को जाना क्यों चाहिए. So basically we can say that कि लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कोई इशू है. दोनों है, लोगों को एक्सेप्टेंस भी नहीं है और मेंटल हेल्थ कोच भी नहीं है. हाँ, exactly. I think coaches भी कम है, तो मे बी अवेयरनेस भी कम है, एजुकेशन कम है उस पे. Yeah, exactly. So पहले से ज्यादा अभी यानी ज्यादा लोगों को पता है या वही उतना ही है डिफरेंस? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, पता है, लेकिन एंड रिजल्ट वही है कि पता होने के बाद भी रिजल्ट सेम तो जाते नहीं. सो प्रोबेबली देयर इज समथिंग व्हिच इज लैकिंग, वो बैरियर है कि यार मैं जाऊँ कि नहीं, या पता तो करो कि मैं हूँ वो कैटेगरी में जिसको लगेगा. Yeah, exactly. So आप जैसे आपके पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ
कैसे कहाँ अफेक्ट कर रही है, या फिर आपने कहीं ऑब्जर्व किया हो, आप एथलीट्स के साथ हो, गेम देख रहे हो, हाँ, तो कभी ये ऑब्जर्वेशन है कि अरे हाँ इसको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है? बहुत बार होता है। लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, उसको इंजरी से कुछ लेना देना नहीं, पहला उसके दिमाग में आता है यार मैं खेल पाऊंगा क्या, मेरे को कोच आगे टीम में लेंगे क्या, मैं कब ठीक होऊंगा. सो rather than treating his injury, he's in his thought process. He comes to me, ये प्रॉब्लम हो गया है, मैं कब खेल सकता, मेरे मैचेस है. बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आते हैं कि उनका ब्रेड एंड बटर इज द स्पोर्ट, तो वो कैलकुलेशन चालू हो जाता है कि यार अगर मैं खेलूंगा नहीं, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आए तो मैं लाइफ कैसे चलाऊंगा, फैमिली कैसे चलाऊंगा. सो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर जगह से वो दे आर ट्रैप. सो है प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है. सो आपने कभी देखा है यानी कैसे, यानी कौन से परफॉर्मेंस में, यानी कोई एग्जांपल की यहाँ इसको लैक हो रहा है परफॉर्मेंस क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है? लाइक वो होता है ना कि एक कोई अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूं, बॉलर है जो बहुत फेमस है, अरे यार बहुत विकेट्स लेता है, फिर एक बैट्समैन जब उसके सामने जाता है उसके दिमाग में पहले ही रहता है कि यार ये मेरा विकेट ले लेगा, खेलने के पहले ही बोल देगा कि मैं आउट होने वाला हूं, एंड देन ही गोस, ही डज सम ब्लंडर और वो आउट हो जाता है. नॉट बिकॉज इसका गेम खराब है, इसने पहले ही सोच लिया कि यार वो भी आउट कर देगा. So do you think that mind game comes first and then we go with the physical game? 100%. In fact, you know, in our physiotherapy, we teach them some exercises where mental imaginary is done. कि अगर मैं किसी को स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, मैं पहले उनको इमेजिन करवाता हूँ कि यार तुम स्ट्रेच कर रहे हो, तुम्हारा जो भी स्ट्रेचिंग पॉइंट है, यू आर क्रॉसिंग दैट, कीप गोइंग. दे स्टार्टेड बिलीविंग इन द थॉट, यू नो, अच्छा पहले मैं यहीं तक जाता था, अब मैं यहाँ तक जाता हूँ. After that, when you give them the exercise, they actually improve without even touching them. So it is mentally preparing them Mentally first. preparing them first for the same event that they're supposed to do. And I think a lot of athletes do it. I don't know about Indian athletes, but I've heard huge Biggest stories. example, Sachin Tendulkar. Oh, he used to do mental He used to imagery. get out in 90s, everyone knows that. Yeah, He used to do mental imaginary. We call it mental imaginary. yeah. Where in his thought process, they took him in that zone where he's in 90s. And you know, they trained him mentally how to deal with that pressure. And after that training, he suddenly, you know, got out of that nervousness and he again converted those 19 to century. That is the biggest in India. जहाँ पे mental imaginary famous हुआ. Still people are not taking Yes. advantage of it, or Right. maybe lack of knowledge, maybe. Probably lack of knowledge. I believe if they know that this is something that will help them, so they will at least give it a try. So they don't know only कि क्या होने वाला है. मेरे को यार मैं क्यों जाऊँ? मेरे को क्या होगा इससे? अब मेरे को कोई डॉक्टर बोलेगा कि तू ऐसा मत कर, वैसा कर, तो उससे मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसे कैसे हो सकता है? So that belief and that education is not. So how do you think? I mean, आपने कभी सोचा कि ये अवेयरनेस आपके तरफ से एथलीट्स तक जाए, या फिर आप मे भी उनको बताते होंगे? Yeah, so you know, if there are injuries or if there are conditions where we are treating them, they are not getting all right. For example, somebody comes to you with a back pain. All his investigations are normal. There's no problem physically, investigation-wise, blood reports are normal. Still, he complains of back pain. Then we recommend them to go to a psychologist. Probably there is something which is haunting you, and because of that stress, you are probably getting a back pain. And there are few clients who have actually recovered of injury just by counseling. So, yeah, we do prescribe, you know, clients for mental health, but I don't think less than 5% goes to the doctor. So I think it is more like coaches को भी इस चीज का knowledge नहीं हम बोल सकते, because they are the one जो They are the knowledge one- दे सकते हैं इस field में. So, like how I started my career, we did educational talks, we did a lot of seminars, CMEs, and that is how people came to know that sports physiotherapy is होता है. नहीं तो पहले कैसे था कि फिजियोथेरेपिस्ट, मेरे को स्पोर्ट्स में इंजरी है, मेरे को फिजियो के पास जाना है, मेरे को पैरालिसिस हुआ, मेरे को फिजियो के पास जाना है. डिफरेंशिएशन नहीं था. I came in Nagpur from Mumbai, from, you know, of being a proper sports physio,
And I saw कि यार यहाँ पे तो graduate also calls them a sports physio, and there are still many physios who, हाँ, I'm a specialist by doing a 2 days का workshop, certification workshop. So I started taking seminar. That is what I believe कि psychologists should do. इतना करो कि people start understanding कि उनका profession क्या है. Once they understand, automatically things start getting better. अभी ऐसा है कि I'm a mental health coach. What I see in the society. So, psychologists come, I'm a mental health coach. He talks about his work and he goes. After 2 days, I don't remember his name. I don't know where he stays. I don't know whether I should go to him. Situation is same. But if a mental health coach comes, takes seminars, teach us, this is how it works, this is what is done, this is how you'll benefit, then वो मेरे दिमाग में रहेगा. Once I understand his work, then I know कि when I should do it. So we can say lack of people in this field as well. Yes, 100%. Because अगर लोग हैं तो वो knowledge भी share करेंगे and result oriented रहा तो people will go. Yes. So I think it's not wrong with people, but it's both the side. Yeah, exactly, both ways. So आप भी इस field में हो. So it is like every field में आपको mental pressure, performance कम होना, stress and everything goes. So आप कैसे अपने mental health को manage करते हो या what are your strategies in it? My strategies is from childhood I don't take tension. So I'm like हुआ नहीं हुआ छोड़ो. Maybe because financially I'm sound, my father, I had a backup. So I never was pressurized to have to do something. Now also, but today in my clinic if there are no patients, I'm like patient के साथ chill वाला day. And when there is work, I'll work. So that is how probably I deal with my mental health. If something is good, perfect. If it's not good, chuck it. Do something else. So basically kind of positive way of taking everything. Yeah, maybe that. Because it goes in a positive way. कि चलो आज तो मस्ती करना है, आज मैं free हूँ. And I don't think क्या होगा. That's the strongest point of mine. Like if suppose tomorrow my friend calls me, which happened. We were talking to a client over here कि एड्रेस बेस के हम जाना है ये वो चल चलते हैं. We booked it. I didn't thought about what will happen in the gym, what will happen in the clinic. I'm good. It's like that. That is me. That's a good thing because I think ये attitude अगर हम रखें तो ये सारी चीज़ों को deal करने का एक way बन जाता है. And it goes in like habit बन जाती है. So मुझे problem नहीं होगी. And अगर कुछ problem हुआ भी, when I come back, I know it will be rectified one time. So I take that stress. Yeah, exactly. That's a good point you mentioned here. Also, there are a lot of research on mind-body connection, and I think they were proven that it helps you a lot. Yes. So, what do you think कि mind-body connection sports में या फिर आप military वालों के साथ काम कर चुके हो, आप अलग-अलग domains में काम कर सकते हो. So, वहाँ पे mind-body connection आपके हिसाब से क्या thoughts है उस पे? I've never seen it, never dealt with it, so I have no idea about it. But I have read it, so I know if there is something which will be applied over there, it might give a better result. Like, as I told you, in exercise we do that mental imaginary. So it's basically mind body. Mentally I'm telling my body that you're performing better. And in reality actually you start performing better. But I've never seen it happening over there. Never. So, जब आप फील्ड में जाते हो, आपको कभी ऐसा कुछ है कि कोई एथलीट ने बोला हो कि उसे माइंड या फिर मेंटल हेल्थ से कोई चैलेंजेस है? Yeah, I have met few athletes like this. In fact, अभी जिम में एक निकला है. So he's suffering from schizophrenia. He's a professional golfer. So the first day when he came to me, he said, "I play golf," and he did not tell about this condition. After talking to him after a week or 10 days, then he told me, "Sir, I'm dealing with this mental health thing, which is schizophrenia, and I'm taking counseling and all, and these are my medications." Then he started working. Initially, he kept it hidden. So yeah, we have clients who go to a psychologist who are dealing with it. There are many clients who will not agree कि मेरे को कुछ है mental problem या आप देखो क्या करना है. So maybe kind of a taboo कि अभी भी ये issues मैं पागल हूँ.
हाँ ये अभी भी है। साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ आगे नहीं। हाँ एग्जैक्टली और आई थिंक आपका आपका व्यू क्या है इस पे कि लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, फिर आपके थॉट्स कि लोग इसको कैसे चेंज करें? So the more awareness will happen, the more changes will happen. तो अगर आप Instagram post upload कर रहे हैं and you see many posts regarding mental health. If you're going somewhere, you find many posters about mental health. If you see articles about mental health, once I see more and more mental health, I'll start understanding that कि यार ये होता क्या है। अभी ऐसा है कि मेरे सामने कोई आता ही नहीं mental health। तो एक साइकोलॉजिस्ट खड़े होकर बोलता है कि there is something, but उसके अलावा और कहीं है नहीं। ना मेरे घर पे कोई बात होती है, ना मेरे वर्क प्लेस पे बात होती है, ना मेरे कोई सीनियर्स इसके बारे में बताते हैं, ना मेरे टीचर्स ने सिखाया। So what is mental health? So actually people don't know about it, so that's the core problem. That's the core problem. I didn't know about it till I entered medical. मैं वो टीवी में देखता था, as I told you, you know, they hypnotize you, they talk to you. So I was like, ठीक है, बाकी तो करते हैं। So wrong knowledge. Wrong knowledge, yes. So आप अगर मैं आपको बोलूँगी कि you have that opportunity कि आप इस फील्ड में आप एथलीट्स के साथ मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लाओगे, तो आपके पॉइंट्स क्या होंगे कि इसको कैसे लाना चाहिए या फिर कितना इम्पोर्टेंट भी है इसे लाना? सबसे पहले तो it is very important. As they say, nutrition, good sleep, good exercise, good skill, good technique, good mental. अगर आपका सोच सही रहेगा तो आउटकम सही रहेगा। If I enter a game with a mindset of I am the best and I will win it, I will actually win it. So if I enter a game scared, I don't know what will happen, he plays better than me, last match में उसने मुझे हराया था, तो I'm already in a bad step. मैं खराब ही परफॉर्म करूँगा। So mental health मेरे हिसाब से तो फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि when a sportsman enters the game, पहले सोचता है कि मुझे गेम पसंद है। It starts from there. तो जब वो पहले सोचता है, पहले खेलता नहीं, पहले सोचता है, इसलिए खेलता है। जब सोचता है तो why mental health not on the first point? So I believe कि take it from bottom, put it on top. Yeah, exactly. I think that's a very good thing you told, and I think अभी शायद लोगों को मैं चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करूँ, मे बी सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं बट मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, बिकॉज जनरल पॉपुलेशन को भी उसकी बहुत ज़रूरत होती है। Mother, father. A child does not know what he's going to become. The mother father decides कि इसको क्रिकेट में डालता है, इसको हॉकी में डालता है, इसको फुटबॉल में डालता है। So if they know about mental health, they will educate the child about it. Child जब तक बड़ा होगा, then you can't mold him. You know, you are something like this, you need therapy. These are not perfect. मैं बचपन से तो कभी देखा ही नहीं। So when the parents, the elders will know more about it, automatically that passes to the generation. Yeah, that is true, because मुझे अगर ये चीज़ बचपन से पता है तो वो वायरिंग हो गई मेरे माइंड में कि ऐसा होता है, ये इम्पोर्टेंट है और इससे चेंजेस होते हैं। So I think it was a very good conversation on this, and thank you so much for your time, and thank you so much for keeping all the good points here. Thank you. You.